let me tell you one thing. First and foremost, go for the basics. The projects you can study anytime. If you know the orbits, launch vehicles, any satellite, any launch vehicle, any program and policy you can understand. So first concentrate on the basics. What are the basics? The project's policies could be understood anytime. Dynamic section could be understood anytime. That is what people are doing mistakes again and again. Something which is part of the basics, they don't know even the gravitational difference between the gravitational force and gravity, and they are talking about the projects. That is the mistake you people are making. Teaching something which is dynamic, someone is well understanding of the basics, can be explained anytime. That could be explained anytime. Now galaxies, I am coming on that. Once this will be over, then I will come to the projects, because projects are on this thing only. Why projects are launched? For the exploration of space, exploration of biodiversity, but whatever you say. So first understanding of basics are very important. That is what UPSC is concentrating on. Like last year they asked the level of enrichment. What is the level of enrichment for the atomic energy and what is the level of enrichment for the nuclear weapons? So that is the part of the basics itself. If you understand the basics, you can solve. You can understand the dynamic sections altogether yourself itself. इसका कहाँ है? Now galaxies. How do you define galaxy? Milky Way is one of the galaxy. That is not the definition, that is an example. A system of stars. A huge system of definition is complete or incomplete. So how it could be completed? Together by gravitational force. Means a galaxy in itself is a bounded structure, but in relation to the rest of the galaxies, unbounded. Internally it is bounded, but in respect of rest, externally it is unbounded. And gravitational force is one of the fundamental force. Why gravitational force occurs? What is the source of gravitational force? Yes, right. That is because of presence of mass. In celestial objects, या cosmological objects या objects of universe, is source of gravitational force. Yes, in relation to rest, it is unbounded. Yesterday you studied, that is why universe is expanding, but within itself it is bounded. I am coming on that. What is the, how it is bounded by gravitational force? See here, galaxies are departing. That departure started with the Big Bang. The Big Bang was source of the energy for the expanding state of the universe. But galaxies in themselves, understand here, if you look at a given phenomena,
We look internality and externality. Internality means inside galaxy. Externality means in relation to other galaxies. And this understanding is very important. Internality and externality across the policies, across the systems, social system, political system, economic system. Economic system में economic rationality is inside, internality. But impact of economic systems on society, environment and ecology is externality. ये सब समझोगे ना तो अपने आप ही प्रोजेक्ट पढ़ लोगे. You don't need to ask to the teachers. That is why people first in USA they teach classical physics, then they teach applied physics. They teach classical political science, thinkers and thoughts, then they teach the applications. You study classical geography, then you study the applied side. That is the problem. People are studying environment and ecology, climate change without understanding of climatology. How far you can travel? The distance traveled by you with this approach is going to be limited. You are going to limit yourself, you are going to expand your horizons. That is very important. Okay, now I am coming on. Once this will be over, I will be coming on. And it will be not required by me to be explained. You can go and understand it. The purpose could be understood. Devices could be understood. Okay, now? And galaxies are, if these are bounded, so galaxies are going to have shape. Because something which is bounded internally is going to have shape. And observed galaxies are classified into three categories: helical, elliptical, and irregular. Irregular means no geometrical shape. They must be in the early stage of the formation. And most of the galaxies helical, spiral. Helical is also called spiral. Yeah. In fact, we are representing three-dimensional reality of space in a duration of time at a point of time on two-dimensional this digital board. So you have to keep imagining yourself. Because here we have two-dimensional digital board. Okay, na? For UPSC that does not make a difference. You are not going into the research. अब ऐसे दिखाओगे तो ये ऐसे होगा. This is the three-dimensional space. Representation is on two dimension. So reality is going to be distorted. Okay, na? Reality is going to be distorted. Something which is three-dimensional, we are representing on two-dimensional digital board. Okay, na? And most of the galaxies which have been discovered by us, studied by us, are helical in nature. Helical या spiral in nature, including our Milky Way. अभी आ रहा हूँ ब्लैक होल आदि पे, अभी आ रहा हूँ, अभी तो शुरुआत ही है ना. ब्लैक होल्स आर पार्ट ऑफ द गैलेक्सीज. सीक्वेंशियल पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है ना. इन यूपीएससी व्हाट इज इंपॉर्टेंट? लॉजिकल सीक्वेंसिंग. सी हियर, 4 things in UPSC are very important, civil services. First thing is connectivity. Connectivity is ability to connect.
and without connections we can't have systems. Connections are source of connection between among the parts is source of structure. Structure helps in organization of activities, organization of parts. तो पहला जो चीज होता है that is connectivity. How do you decipher the connectivity? Connectivity could be devised through studying the syllabus, but that is not sufficient. Geography prelim syllabus is just written in 2 to 3 lines. Universe is nowhere written. Black holes are nowhere written. Solar system is nowhere written, but the questions have been asked. And now number of questions are going to increase, plus PYQ. Thus provides connectivity to this. Means you should connect yourself to the syllabus and PYQ. Because real dimension about studies are provided by PYQ itself. Length, width and depth. You dig inside in learning. You go deeper, no? Yeah, we go higher. Deeper. तो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सेकंड होता है लॉजिकल consistency and sequencing of your study material. The process of learning must be on the basis of this syllabus plus PYQ. जैसे आप यूनिवर्स पढ़ रहे हैं तो डायरेक्टली यू कांट जंप टू द अर्थ. विदाउट स्टडिंग यूनिवर्स, सोलर सिस्टम एंड अर्थ, यू आर गोइंग टू जंप टू द प्रोजेक्ट. इधर यू वांट टू टेस्ट मी, लिटमस टेस्ट लेके आई थी, रेड या ब्लू. डोंट जंप. लाइन बाय लाइन, point by point, diagram by diagram studies are important. You cannot jump. Whatever the book, textbook you are selecting, read line by line, point by point. Even sometimes between the line, above the lines and below the lines. Otherwise, it is a huge ocean. And which is the largest ocean? Pacific. It is deepest too. It is large, deep and with all sorts of hazards, including typhoons, willy. Okay, na? So you could be lost. Don't want to lose, na? Okay, na? Third होता है तुम्हारा understanding of, since it is geography, understanding of maps, diagrams and charts. Okay, na? Because sometimes questions are derived from, and remember that these are the basic tools of geography. These are basic tools of the geography. If the geography is body, so maps, diagrams and charts are the soul of the geography. You cannot disconnect body from the soul. Body without soul is dead, and soul without body, भूत, पिशाच, चुड़ैल, जिन. सिक्वेंशियल पढ़ो, जंप मत किया करो. 2 ही बुक पढ़ो लेकिन ठीक से पढ़ो. जंप करोगे तो नहीं होगा. प्रोजेक्ट बाद में आता है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स. Once we understand the basics of the biotechnology and genetic engineering, then we go to understand what are the projects have been launched worldwide and India. ऐसे करोगे तो नहीं होगा.
या वो यूज और टेस्ट मत किया करो. आई हैव गॉट इनफ मैच्योरिटी. एंड फोर्थ होता है तुम्हारा बैलेंस. बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू नो वेयर टू स्टॉप. अदरवाइज यूनिवर्स इज ए ह्यूज टॉपिक. If I do not finish according to the PYQ and the syllabus, it will keep on going. We are not here to become Copernicus. We are not here to become Galileo. We are not here to become Kepler and Newton. We are here to just qualify prelims and civil service. आगे चलें. That is there. I am coming on galaxies, then I will come on. उसके बाद तुम खुद ही पढ़ लोगे, मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर बेसिक्स हैं तो. ओके ना? So our Milky Way is helical galaxy and the Milky Way is important to us. Every day new galaxies are getting discovered. That you can follow with the newspapers. ये डायनेमिक सेक्शन है. डायनेमिक सेक्शन के पहले स्टैटिक आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट टू क्वालिफाई सिविल सर्विसेज 6 पेपर्स यू शुड कीप इन साइट. ओके ना? एक्सक्लूडिंग CSAT. ओके ना? 4 कोर सेक्शंस ऑफ GS: ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, एंड 2 पेपर्स ऑफ योर ऑप्शनल. Without geography, you are studying disaster management. That is going to bring disaster to you. You are bringing disaster close to you. What is difference in the hazard and disaster? Threat and disaster. Realization of threat and related death and destruction, which is above and beyond ability to. So you are bringing disaster to you. You are producing a man-made disaster. ये 6 पेपर पे आपका कमांड होना जरूरी है. ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमी. रेस्ट यू कैन स्टडी योरसेल्फ. ओके ना? रेस्ट यू स्टार्ट आफ्टर स्टडिंग दीज 4 and 2 papers of the optionals. उसमें भी जो फर्स्ट पेपर होता है that is theoretical, second is applied. You have to keep on studying with the newspapers. Whether it is the public administration second paper, geography second paper, या history में तो I don't know much, I have not given, या anthropology second paper, that you have to keep on improving. या sociology second paper, या PSIR second paper, you have to keep on improving. कोई static नहीं है. Means there are textbooks you need to follow, you need to grab, you need to understand, and then you keep on improving. Now I am coming to the Milky Way. Is our home galaxy. And shape is helical या spiral. In the center of Milky Way, black holes dominate. इससे क्वेश्चन है. Black holes dominate. Now I am defining the black holes. Black holes are formed by gravitational collapse of stars which are huge.
in shape and size. Gravitational collapse means implosion under influence of its own mass and related gravity. And when implosion begins, once their source of energy is exhausted. अभी इसके बाद स्टार होगा, then I'll explain everything. Okay ना? And gravity. Gravity is product of the gravitational force itself. Okay na? That is always inward towards the center of a celestial body. Implosion of huge stars. What is your guess? Yesterday you were in the class. Why you missed the class? I told you universe is expanding. Our telescopic power is expanding. We don't know, we have not yet decided what is the limit of the universe. Still galaxies are getting discovered. There are realm of known in the universe, there are realm of unknown. Unknown perhaps is more wider, more bigger than the known. लिख लो कहीं, ऐसे में आजकल ऐसे ही यार, अभी भी तुम लोगों का दिमाग ठीक नहीं हुआ है. I am saying universe में there are parts which are known to us. Even in the solar system, even on earth, below the earth, there are parts known to us. And there are parts which are much bigger, unknown to us. Everything is not known to humanity. We are still discovering. That is why we are launching telescope. Space telescopes, why we are launching? Hubble telescopes के बाद James Webb telescope. Why we are launching Aditya? Why we are launching Chandrayaan? First, second, third. Everything was completed by first, then why we went to the third? Discover more. आप कहाँ तक पहुँचे हैं? Have you gone beyond the solar system? Have you gone inside the black hole and returned? Your answer is there. हाँ? आप अपने कितने पीढ़ियों को जानते हैं? How many generations of the past you know? 2-3 और 2-3 से ही आप आ गए. आपके भी तो फोर फादर पेरियोलिथिक मैन रहे होंगे ना, मेसोलिथिक रहे होंगे ना, नियोलिथिक रहे होंगे, केव मैन भी रहे होंगे, और उनके बारे में आप जानते नहीं. तो लगाए कि नहीं गैस? हैं? समुद्र में खड़ा होकर समुद्र को नाप दीजिएगा. समुद्र के शोर पे खड़ा होकर कोस्ट को बोल दीजिएगा समुद्र देख लिए, होराइजन को देख के. जितना जाइएगा ना होराइजन और आगे जाएगा. That is the nature of the horizon. If you move towards horizon, horizons move back. And step back, it will come closer to you. And even your eyesight constant. गलत बोले.
बिहार का है, बिहारी चतुर है वो। गुड क्वेश्चन पूछता है। टीचर नीड टू हैव द कॉमन सेंस which is plenty with me, thanks to God. Even our body, even there are human genome projects, how much we know? Still things are moving on in human physiology, human structure, degeneration of the organs. Every day new discoveries are coming into the medicines. So many generations of antibiotics are there. There is no antiviral drug to cure the viral diseases. Prevention are there with the vaccination, but cure is not there. We don't have interference like antibiotics. That is why to control and regulate viral diseases, we need preventive, support and care. Because of gravitational collapse, their density is huge. ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. Density of the black holes is huge. So what is going to be state of matter and energy inside black holes? Visible या invisible? Invisible. It contains dark matter and energy. The matter energy which is not visible to us. Any kind of device we are using electromagnetic radiation to receive and study. That is called dark matter and energy. And energy is more than matter. Dark energy is more than dark matter. Okay? So if gravity is huge, density is huge, gravity is also going to be huge. And remember that extent of gravitational influence of a black hole is known as event horizon. ये पूछा हुआ है. Extent of gravitational influence, because it has huge gravity, no? So there must be a sphere of influence. Okay, no? So extent of gravitational influence of a black hole is called event horizon. Why? I am defining it. If light approaches, if light is approaching to black hole and reach to the event horizon, gravitational sphere of influence, it does not have capacity to return. Does not return. Means if something reaches to event horizon, it does not return. Everything goes inside, nothing comes out, in simple words. अब बताओ, अब उसके बारे में कैसे बता दें? तुमको भेजें ब्लैक होल में? हाँ. So they must be outside of its event horizon. They must be outside of its event horizon. अब वो सब कुछ थोड़े कर लेगा. अब तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे तो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शंस ऑफ योर्स विद इन द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया. अब पाकिस्तान में थोड़े घुस जाओगे, बोलेंगे लाहौर का भी एडमिनिस्ट्रेशन मोदी जी चलाएंगे. दैट इज नॉट गोइंग टू हैव. If a body is there, thing is there, it has its sphere of influence. My sphere of influence is this class. अब मैं सोचूं कि वहां पे ऑक्सफोर्ड में भी बच्चे मेरे पढ़ रहे होंगे, तो नहीं पढ़ रहे होंगे ना. Everything has sphere of influence.
And for civil servants and aspirants, that is very important to understand sphere of influence. इवेंट होराइजन पूछा हुआ है. Influence, extent of gravitational influence of a black hole is known as event horizon. Event का मतलब क्या, कुछ होता है वहां पे. Which is fastest? Light. 3 lakh kilometer per second is the speed. Even the light approaches and reach to the event horizon, it does not return. Okay. Huh? Event black hole का sphere of influence है. Extent of gravitational sphere of influence of black hole is called event horizon. Extent of gravitational influence of black hole is called event horizon. And inside of event horizon we have dark matter and dark energy. Why it is called dark? Because it does not release any kind of electromagnetic radiation. Yeah, any means electromagnetic radiation is neither released, okay na, nor reflected back, okay na. So a black hole does not allow itself to be sensed. A black hole does not allow to be sensed. Okay na? Because as soon as light approaches to event horizon, that is the extent of gravitational influence. Okay na? Light to return means everything goes inside, ऐसे लिख लो, nothing comes out. Because of the gravity. Yes, gravity. Too much infectious. इसकी gravity बहुत ज़्यादा है. It means that gravity can affect movement of light. ये पूछा हुआ है. Gravity can affect movement of light. पूछा हुआ है. This is how UPSC asks derivations from the basic concepts. And remember that if black holes merge, so that is source of gravity waves. ये भी पूछा हुआ है. That is source of emission of gravity waves, and they affect curvature of the universe. Because of it is not, means we are not getting any kind of electromagnetic radiation coming out of the black hole. उसको बोलते हैं dark matter and dark energy. Any matter above -273 degree Kelvin, like no, -273.2 degree centigrade is source of emission of electromagnetic radiation. -273.2 degree centigrade. At 0 degree Kelvin you can write. So many things have to be explored. Nobody has reached to the event horizon. Means something which is moving and disappearing. Means in the universe everything, means something which is unknown to us, yeah, less known to us, is all probability. Is all probability. अब इसी में hypothesis भी है कि if there are black holes, so opposite is also going to be there. Everything must be going out, nothing coming out. White holes. But that is hypothetical. There are so many alternative theories of universe also कि universe has alternative stages of expansion and implosion. Lekin there are no evidences. Means our knowledge is increasing. Incremental, no?
There is increment in your knowledge or not? You are learning or not? You are digging deeper or not? So same thing happens with the entire humanity also. Okay, na? Question arises, where is our solar system in Milky Way? It is outer spiral arm. Our solar system is in outer spiral arm. So, outer spiral arm, Bhuja. So, it is going to be old star or new star, something which is located outside of the Milky Way, new star. Solar sun is a new star. अभी तुम लोगों को बता रहे हैं consistency of logic क्या होता है. Give me some time. Give me some sunshine, give me some rain. Let me grow in the class. Huh? Gravity waves are released. Because of the huge gravity is there and the something is merging, fusing, so that will be released or not? Space, yes, that produces ripples which could be detected just 2015 they were detected, not long ago. The people had hypothesis on the gravity waves, but the detection was in 2015. And in 1 year it was asked in prelims. अब कुछ आ ही नहीं रहा लौट के तो कैसे होगा? If light is the fastest and it is not returning back, so how we can detect? Means event horizon can be detected but not inside of event horizon. If something is going to Bermuda Triangle and disappeared, how you will detect? How we detect internal structure of Earth? How we made inferences? Because of the seismic waves originating at the foci of earthquakes reach to surface of Earth. अगर वो surface of Earth पे नहीं पहुंचती तो हम क्या जानते? Then they travel on the surface of Earth, certain seismic waves, surface waves. तभी तो हम जानते हैं कि there are earthquakes. हम जो अननोन चीजें हैं या लेस नोन चीजें हैं उसमें inference to the best explanation करते हैं. Inferences are drawn. The various studies are conducted. Facts are collected and then we draw the inferences. उसको बोलते हैं inference to the best conclusion. That is very important in civil services. Solving something which is less known to you in the paper by using the known. Our solar system is not inside Milky Way, it is on the outer arm of the Milky Way. It is not inside. Outer spiral arm of the Milky Way. Shall I draw the diagram? This is Milky Way. Here is our solar system. Mystery of Earth lies in the mystery of the sun. Yes, that could be. Black holes itself. 95% of the energy, mass and energy is inside of the black holes. That is the dark mass and energy. That gives us clue on there is something. Why the universe is keeping on expanding? There must be some source. Okay, na?
means 95% of the mass and energy is dark. That is a calculation, and that is not fixed yet. That keep on changing as the new light come on. Okay, na? Nobody has detected gravity waves before 2015. Okay, na? Mystery of Earth is in mystery of solar system. Now, here is sun. Okay, na? Solar system is the sphere of influence of the sun itself. अभी आ रहा हूँ, इसके बाद वाला ही टॉपिक है, एक ही साथ तो सब कुछ means I am not on internet. Okay ना, I'll reach. Okay ना, so this is going to be a youngster. Okay na, and its age is, yesterday I gave 5 billion. मैंने तुमको एक टर्म बोला था, energy is always greater than the matter. E is equal to mc square. Do you remember? B. Badra Singh? Yes. So now you know E is more या M is more? Energy is more than the mass. That is why we have atomic energy plants, thermonuclear experimental reactors. Okay na? And that is only inference. Okay na? The probabilism is always there. Now, how to prove this one? Let us go to composition of sun. Hydrogen is nearly 70%, helium is 28%. And you know that in the process of nuclear fusion, nuclei of hydrogen combine together to produce helium. And so over the period of time, concentration of hydrogen declines and concentration of helium increases. So if hydrogen is 70%, helium is 28% in a given star, so that is going to be younger or older? Younger. इसी को बोलते हैं logical consistency. If it is outside of spiral arm, it is younger, because here we have old, which had faced gravitational collapse, implosion under influence of its own weight, mass and weight. Weight works under influence of gravity. तो जो यहाँ पे होगा वो पुराना होगा या नया होगा? नया होगा. And that is also expressed through composition. इसी को लॉजिकल कंसिस्टेंसी बोलते हैं. दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है यूपीएससी में टू प्रूव योर पॉइंट्स, टू राइट आंसर्स ऑन द क्वेश्चंस which are including explain and discuss. Correspondence, of facts, means facts belong to a given space and time. That is why facts are value neutral. C is in the class, first row, okay na? That is a fact. The language built around for being heard in the class could be manipulated, could be exaggerated, could be minimized, could be twisted. That is why facts are called soaring. Okay na? तो correspondence of facts क्या है?
कि सोलर सिस्टम इज इन आउटर स्पाइरल आर्म ऑफ मिल्की वे, वो तो फैक्ट है ना। तो एंड सेकेंड कंसिस्टेंसी, इधर से भी लिखा जाता है, विच इज बेटर, दिस वन या दिस वन? कंसिस्टेंसी ऑफ फैक्ट्स, यही दोनों होता है। मैंने बोला था ना कि ट्रुथ विच आर बिलीव्ड एंड जस्टिफाइड, हाउ जस्टिफिकेशन अकर्स, correspondence and consistency. That is why people are asked for interrogation of many times. That is what they look into. Why the Sanjay Singh, that mobile was taken by the ED, no? Okay, na? To have the correspondence of the facts that he had chat with that person or not. Multiple times interrogation, consistency देखी जाती है। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट होती है सिविल सर्विसेज में, स्पेशली इन द मेंस एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस इन द प्रीलिम्स इटसेल्फ। लॉजिकल कंसिस्टेंसी, स्टार इज ओल्डर इफ द हीलियम इज हाई, lesser is the hydrogen, greater is the age, because hydrogen nuclei fuse together to produce helium. So as aging of stars occurs, the percentage of hydrogen declines and helium increases. Greater is the age. अभी आ रहा हूं ना, सन पे आ रहा हूं, वहां से ये क्लियर हो जाएगा। ये पूरा टॉपिक है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। या तो कहो केवल फैक्ट्स देते जाऊं, हो जाएगा, नहीं होगा। नाउ ये चीज जरूरी होता है, करस्पॉन्डेंस ऑफ फैक्ट्स एंड कंसिस्टेंसी ऑफ फैक्ट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई सिविल सर्विसेज, इवन इन प्रीलिम्स। यही तुमको देखना होता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू लुक इनटू। लाइक यस्टरडे आई सेड, हैड बीन देयर ब्लू शिफ्ट ऑब्जर्व्ड, we could not conclude that the universe is in expanding state, universe in imploding state. Red shift की जगह का अगर blue shift दिखे, so it means that the things are moving away from, moving close to us, coming close to us. Then the apparent energy, received energy by us is increasing, frequency is increasing, wavelength is declining. इसी तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है। दे डोंट, हाँ अब तुम्हारा जैसे है कि दैट साउंड में तो तुम खुद ही देख सकती हो कि इफ ट्रेन इज डिपार्टिंग, तो पिच रिसीव्ड बाय यू, पिच डिटरमाइंस द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंस द पिच रिड्यूसेस या इंक्रीजेस, reduces. That is the rate shift itself. But in the case of sound, and if the train is approaching to the platform, pitch increases. Okay ना? Okay ना? तो ये तो साउंड के केस में है, हम लोग जैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लाइट वाला तो नहीं उतना होगा। That we you have to go to the physics lab. Okay ना? You have to go to the physics lab. तो शिफ्ट देखने के लिए उसको घुमाना पड़ता है। You need to have the devices. और उतना तो कोई भी नहीं जाता है, हम मिसाइल में चढ़े हुए हैं बैठ के। Just practical uses are required to us. Their purpose is required to us. Relative advantage, disadvantage of the guidance system, trajectory, path, okay ना? Launch vehicles, यही हमें जानना होता है। You are going as a civil servant, you are a coordinating agency, you are at the top, technocrats are always there to suggest you, you are there to coordinate, you can ask informations for the people who have specialization in that discipline. Chief medical officer is always there to suggest you on medical issues. जिला विद्यालय निरीक्षक is always there to suggest you on education.
आपके पास हैंड्स होते हैं, हैंड्स को क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है. दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. उतना ही जरूरी है. ओके ना. एंड रिमेंबर दैट सन इज रिवॉल्विंग अराउंड सेंटर ऑफ मिल्की वे. It again reflects sun is bounded to center of Milky Way, है ना. Like planets are revolving around sun in solar system. It means that our solar system is also gravitationally bound. Okay ना. So now period of revolution of sun is also important. वो पूछा गया है prelims में. That is 250 million years. That is the period of revolution of sun, and that is called astronomical या cosmological year. Astronomical year या cosmological year. Astronomical year या cosmological year. ये पूछा है prelims में. Period of revolution of sun, and it is again suggesting कि Milky Way is a bounded structure. Otherwise, sun would have lost. If the planets become unbounded to gravity of sun, okay na? So there would not have been existence of the solar system. सही लग रहा है? मूड मत ऑफ करो, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है. जब उतने सफिशिएंट मटेरियल होंगे तो पढ़ा दूंगा. I never guided by the opinion of the students. Something which is basics must be taught first. जंप करने से नहीं होता है. ओके ना. दो टर्म्स हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ईयर या कॉस्मोलॉजिकल ईयर. एक और है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्लोज टू ईच अदर. दोनों पूछा गया है. Means black holes are in the center of the Milky Way, and they are producing a strong gravitational force, and that is making Milky Way a bounded structure. हाँ, सेंटर में ब्लैक होल है तो उसी के अराउंड होगा. हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये टाइम का, दिस इज द यूनिट ऑफ टाइम, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग ईयर ना. हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल ही बोलते हैं. एस्ट्रोलॉजी इज हाफ साइंस हाफ मिथ. एस्ट्रोनॉमिकल ही बोलते हैं. एस्ट्रोनॉमी इज टोटली साइंस. एस्ट्रोलॉजी, तुम्हारे पास चार्ट है अपना, अब उसमें भी कितना साइंस है कितना मिथ है आई डोंट नो एस्ट्रोलॉजी में, बट इट इज एस्ट्रोनॉमी. बता रहा हूं ना. एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, average distance between sun and earth is called astronomical unit, and that is 150 million kilometer. 150 million kilometer. That is why light takes 500 seconds to reach to earth from the sun. 150 million kilometer. उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं. दैट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एंड दैट इज प्रिफर्ड टू मेजर यूनिट्स, मेजर डिस्टेंस विद इन द सोलर सिस्टम. लाइट ईयर इज यूज फॉर समथिंग विच इज अवे फ्रॉम सोलर सिस्टम. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द प्रिफर्ड यूनिट टू मेजर डिस्टेंस विद इन आवर सोलर सिस्टम. लिख लो, लाइट ईयर बोलते हैं.
means the distance traveled by light in a year. That is a longer unit of distance. Distance itself, but the unit is longer. अब जैसे 1 सेंटीमीटर हुआ, 1 मीटर हुआ, किलोमीटर हुआ, that is why means units are increasing. Something which is beyond solar system preferred is light year. Something which is within solar system, astronomically. हाँ? तो अपने करो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, कैलकुलेट करो. Speed of light is 3 lakh kilometer per second, and the average distance is calculate. You have to qualify CSET also, na? Smart girl, na? Unsmart. है? हाँ, एब्सोल्यूट स्मार्ट होना भी नहीं चाहिए. ओके ना? वो आदमी पकड़ लेता है. हाँ, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. अरे 500 सेकेंड होगा, 500 सेकेंड्स लिख लो, कैलकुलेट कर लेना घर पे, और जाके क्वांटिटेटिव इफिशिएंसी बढ़ाओ, नहीं तो सीसेट में ही रह जाओगी. ठीक है ना? छोटा छोटा किताब लेके थोड़ा बहुत किया करो, और ऑनलाइन पेमेंट मत किया करो, कैलकुलेट करके पे किया करो. ठीक है ना? डोंट यूज ऑनलाइन पेमेंट्स फॉर द स्मॉल लाइक मिल्क, चॉकलेट, टॉफी खरीदा तो भी ऑनलाइन दे रहे हैं. हाउ यू विल जनरेट द क्वांटिटेटिव इफिशिएंसी. ठीक है ना? थोड़ा जरूरी होता है. मैं देखता हूं 10 रुपए प्राप्त हुए, 15 रुपए प्राप्त हुए. फॉलो मोदी जी, गो फॉर कैशलेस बट यूज द कैश. हाँ, उतना भी नहीं जानिएगा तो कैसे होगा. हाँ, खर्चा ज्यादा हो या ना हो, बट यू नीड टू हैव द क्वांटिटेटिव इफिशिएंसी. हर एक चीज आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं जहां पे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं. बैंक अकाउंट को भी चेक करते हो कि नहीं, कितना घटा, इतना डेबिट हुआ तो कितना बचा, कभी चेक करते हो कि नहीं तुम लोग. So that is, now I am coming to the solar system. Now geography begins. This is part of the physics. Some people consider it part of the geography. Now pure geography begins. यहाँ से तुम्हारा geography शुरू. The geography concentrate on description and explanation of things on earth and around earth. तो यहाँ से तुम्हारा geography शुरू. हाँ? कॉस्मोलॉजिकल ईयर है, वो टाइम का यूनिट है. ईयर इज द यूनिट ऑफ टाइम, और ये डिस्टेंस का यूनिट है. द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 150 मिलियन. So it takes light takes 500 seconds to travel from sun to earth. The distance traveled by light in a year. Light और year है, is called light year, and that is a unit of distance. That is generally used beyond solar system. Within solar system we prefer astronomical unit. Logic is there. Average distance between sun and earth will give us clue about how things have been distributed inside solar system. देखो, दो तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, समझ लो. दो तरह के सब्जेक्ट होते हैं. एक को तो बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट. दैट इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस, उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं. लाइक पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी. और दूसरा होता है कंक्रीट, लाइक ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री.
दे आर ऑलवेज इन टर्म ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस जरूरी है टू मेजर अल्टीट्यूड एंड डेप्थ, टॉटम लाइन बोलते हैं, DATUM, इक्वेटर टू सी थिंग्स नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, प्राइम मेरिडियन टू सी थिंग्स ईस्टवर्ड एंड वेस्टवर्ड, रेफरेंस हमेशा होगा इन द सब्जेक्ट्स विच आर कॉल्ड कंक्रीट, ये कंक्रीट सब्जेक्ट है, रेफरेंस हमेशा रहेगा, नथिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस। इसीलिए पहले ही पेपर में ज्योग्राफी और हिस्ट्री को रखा गया है। और लोग शुरू करते हैं नेशनल, दे डिग देयर ग्रेव देमसेल्फ, अपनी कब्र खुद ही खोदते। To understand national security, techno-economic capacity is very important. Even for food security, techno-economic capacity is very important. And there was a question. In 1960, India was a net importer of the food. But now India is a net exporter. वो क्या दिखाता है? We need to write on increasing techno-economic capacity of India to produce more, to enhance productivity. ठीक है ना, ये लॉजिक है। तो तुमको मैं यहां से सोचना नहीं सिखा रहा हूं, मैं यहां से सोचना सिखा रहा हूं, ठीक है ना। अगर तुमको प्रोजेक्ट पढ़ाऊंगा ना तो यहां से जिंदगी भर सोचती रहोगे, उसके ऊपर का सोच लो, प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं होता। 5 मिनट्स रीड, गो एंड वॉमिट, है कि नहीं। पहले आप पढ़िए ना, कोर सेक्शंस पढ़िए ना, उसके बाद डायनेमिक पे चले जाइए। बिना क्लाइमेटोलॉजी के इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी पढ़ लीजिएगा, बिना ज्योग्राफी के, बिना सॉइल के, बिना वाटर बॉडीज को जाने, फ्रेश वाटर सोर्सेज को जाने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को जाने। साइक्लोन्स आर नॉट थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, पैंडेमिक्स एंड एपिडेमिक्स आर नॉट थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। तो पहले तो आप कोर पढ़िए, कैपेसिटी पढ़िए इंडिया का। कैपेसिटी इन्हीं 4 सेक्शन से आती है। पता चला जो पहले लिखा है एग्रीकल्चर, उसको बाद में पढ़ रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी, जो बॉटम पे लिखा है थर्ड पेपर में, उसको पहले पढ़े, तो पढ़ लीजिए। ज्योग्राफी पढ़े नहीं और क्लाइमेट चेंज पढ़ रहे हैं। That is there. इसके बाद समझ में आ ही जाएगा। इसके बाद तो कोई भी चीज इस पे भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि वी ड्रॉ ओनली इन्फ्रेंसेस, वॉट एवर द एविडेंसेस वी गेट विद द टेलीस्कोपिक स्टडीज, वी ड्रॉ द इन्फ्रेंसेस, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंसेस तो है नहीं। If there is some source releasing any kind of electromagnetic radiation that is received, analyzed and we come out with the conclusions. हम टच करके तो मून को भी नहीं देखे, हम टच करके तो पैसिफिक भी नहीं देखे, मैरियाना ट्रेंच भी नहीं देखे। डायरेक्ट सेंसिंग तो सब कुछ हमारे पास नहीं है ना, दैट इज वाई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर यूज्ड, सेंसिंग फ्रॉम द डिस्टेंस। आगे चलें, सोलर सिस्टम। अब तुम्हारा ज्योग्राफी शुरू होता है। सोलर सिस्टम, सिस्टम मीन्स क्या हुआ?
पार्ट्स विद देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड अरेंजमेंट्स, पार्ट्स पहले होता है, ओके ना, कुर्सी के पार्ट्स हैं, उसके बाद कुर्सी है, हाँ ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, सीक्वेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सिविल सर्विसेज व्हाइल यू आर गिविंग इंटरव्यू या प्रीलिम्स या मेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये बेसिक डेफिनेशंस हैं, एंड डेफिनेशंस एंड द बिगिनिंग ऑफ द आंसर डू मैटर इन सिविल सर्विसेज। फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट मीन्स it travels certain amount of distance, okay ना, it provides certain amount of advantage, ये बहुत जरूरी होता है। तो in solar system we have these parts, a star known as sun, so sun is only star in our solar system, star I'll define, rest of the stars are outside of our solar system, our solar system contains only one star, that is sun। क्यों स्टार बोला जाता है अभी आ रहा हूं, कंपोनेंट्स को लिख लेने दो। देन वी हैव प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसके बीच में थोड़ा सा गैप दे देना, मार्स एंड जुपिटर में किसी चीज को एडजस्ट करना है, नहीं एस्टेरॉइड्स को, हाँ एस्टेरॉइड दैट इज बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स, उसको एडजस्ट करूंगा ना, सीक्वेंसिंग दे रहा हूं ना मैं, टॉप टू बॉटम आ रहा हूं ना। देन वी हैव सैटेलाइट्स। अच्छा ये समझ लो, ये पूछा हुआ है, मर्क्यूरी इज क्लोजेस्ट फ्रॉम सन among the planets, but in respect of earth ये पूछा हुआ, which planet is going to be closest? Venus है, Venus first है, Mars second, Mercury third, Jupiter fourth, and rest are outside, so that you can arrange. This is how UPSC play the tricks. These are the tricks of the game. क्या मतलब अगर सन से देखोगे तो मर्क्यूरी इज क्लोजेस्ट, बट नाउ वी आर मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्थ। मैंने बताया ना, कंक्रीट सब्जेक्ट है, रेफरेंस कुड बी चेंज्ड एंड दोज हैव बीन चेंज्ड। समटाइम्स दे आस्क चेंजिंग टाइम एंड डेट इफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज क्लॉकवाइज, वो अभी आएगा, वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बाद मैं पढ़ाऊंगा, ओके ना। They change the rotation of Earth, hypothetically of course, but they ask you to calculate time and date. Okay, na? So if the reference is changed, it becomes Earth, then the Venus is going to be closest. Mars is second closest, Mercury is the third, and the Jupiter is the fourth. Then we have satellites. Then we have asteroids. Asteroids are located between the orbits of Mars and Jupiter. मैं यहाँ पे I'm writing just A, तुम लोग समझ लेना asteroid. That is called asteroid belt. पूछा हुआ है prelims में. Then we have meteorites. इससे भी क्वेश्चंस हैं, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. Meteorites are revolving around Earth. ये meteorites का in outer space. Space outside of atmosphere of Earth is called outer space. आज उतना दूर कहाँ बैठे हो, ठंडा लगता है. हम सोचे कि डिस्टेंस डीके कर रहे हो. बिहार का है ना. देन वी हैव
comets, Plutoids. Remember that part of solar system which is beyond orbit of Neptune is called Kuiper belt. And it is also called graveyard of solar system. It is also called, ये question answer what he is writing, A, उसका मतलब क्या होता है? Organize. Who will speak? Me. I'll see over here. I'll ask you what they are asking, because we are not from the OMG type of age. 1 year 2 smileys we know and their expressions. Not that कि 1 drop ऊपर 2 drops नीचे तो क्या? How many smileys you can decipher? कितने का meaning मालूम होगा तुमको? How many often you use during chit chat? मैं तो केवल एक ही मतलब एक ही 2 जानता हूँ, ठीक है ना? तो I'll ask organization and arrangement. You are writing here, they themselves are writing. To me, I have to look here, to you and these. Okay ना? तो comets and Plutoids are in Kuiper belt. K-U-I-P-E-R. K-U-I. Kuiper is the not technical term. Belt is technical term. Kuiper is the name of the part of the solar system beyond orbit of Neptune. It's called Kuiper belt. Orbit of Neptune, of course. Graveyard. Graveyard का मतलब something which is residual, relic. Solar system. Beyond Kuiper belt, it is over. It is merged with the other system. Part of solar system beyond Neptune is called Kuiper belt. And that is called graveyard of solar system. Graveyard किसको बोलते हैं? जो relic हो उसी को बोलेंगे, तो relic things are there. That is why anything now in Kuiper belt is not considered as a planet. Pluto was discarded from the category of the planets. Dwarf planet पहले क्या गया? Now they are called Plutoids. Pluto-like objects. PDF आपको सेंड कर दूंगा, मैं आपको वेट करना क्लास. What kind of PDF? Means they must be recording. आपने लिखा. Okay. So now we are starting with the sun. Sun is the first. Then we will come to the planets, then satellites, and the differentiation in respect of their location as well as nature. अभी तो आ रहा है, सब एक्सप्लेन होगा ऊपर से नीचे तक. सिस्टम मैंने इंट्रोड्यूस किया, पार्ट्स मैंने इंट्रोड्यूस किया, देन आई डील विद द पार्ट्स. इसको बोलते हैं डिडक्शन. दिस इज कॉल्ड डिडक्शन, डिडक्टिव लॉजिक. How many people have taken this philosophy? This is called deductive logic. Introducing the parts means introducing the system and means taking out the parts. तो मैंने parts introduce किया, क्योंकि parts से ही massive number of questions are there. Now sun. धीरे धीरे मैं स्मार्ट हो जाऊंगा, नहीं इसी से चेंज कर दिया करूं. आपने रीअरेंज किया है क्या? यहां से मैं चेंज कर दिया. अरे वाह,
He is facilitator. This is called facilitator. Now sun. So sun is only star in our solar system. And nearest star to earth. पूछा हुआ है. Nearest star from earth. Because it is only star in solar system. It is naturally going to be nearest star from earth. Which are the second? Which one is second star? Nearest star? Proxima Centauri. But that is outside of our solar system. Second nearest star is Proxima Centauri. Proxy का मतलब होता है close. Proxima. Century भी लिख दें. Proxima. Second closest. अरे solar sun is in the solar system. Only star in the solar system. Naturally, it is going to be closest from Earth. पूछा हुआ है UPSC में. And from where they have taken this question? From 6th standard, Land and People, old NCERT. Pala chapter. But Proxima Centauri is outside of our solar system. Now question arises, why sun is described as a star? Because there are questions in the mains GS, what is artificial star? And so many, their examples have been asked, including ITER. है कि नहीं? इस तरह से पढ़ोगे ना तो अपने आप ही हो जाएगा. This is called connectivity. Means a celestial object, of course it is celestial, cosmological, celestial, producing its own light and energy. But in modern times, contemporary times, this definition is not going to serve purpose entirely, partial. Remember that this production of light and energy is sustained. Otherwise, if that is fluctuating, that itself could be source of the often climate change. है कि नहीं है? So there is no other system, no other celestial object in our solar system producing its own light and energy. Entire range of the rest of the systems which you have studied within the solar system are depending on sun for light and energy. Venus is called morning and evening star, but that is not a star. Meteors are called shooting stars, but they do not define as a star. पूछा हुआ है questions, इसीलिए इसकी definition जरूरी. So how sun produces its light and energy? Nuclear fusion. इसका definition लिख लो of nuclear fusion. Fusion. Lighter nuclei of hydrogen combine together to produce helium nuclei. Lighter nuclei of helium. Sorry, lighter nuclei of hydrogen combine together to produce helium nuclei. Lighter nuclei of hydrogen combine together to produce या फ्यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस हीलियम न्यूक्लियस. अब यहां से भी क्वेश्चन है. रिमेंबर दैट हीलियम न्यूक्लियाई इज इक्विवेलेंट टू विच रे? अल्फा.
Alpha, beta, gamma you will have studied. Ionizing radiation. The helium nuclei is equivalent to alpha ray. Beta is equivalent to electron. And gamma is neutron. ठीक है ना? Alpha ray is equivalent to the helium nuclei is equivalent to the alpha rays. Beta is equivalent to electron. One negative charge, you know. And gamma is equivalent to neutron. Sustained production of light and energy is sustained. अगर वही fluctuate करेगा, if I fluctuate, what will be happening to your knowledge? You will be fluctuating. ना, my knowledge must be sustained. ना, देखो 3 स्टेज होते हैं. आइडिया इज क्रिएटेड. आइडिया कुछ भी हो सकता है, मैटर हो सकता है, एनर्जी हो. ड्राइवन एंड सस्टेन्ड. लाइक civil services preparation is an idea. It has to be driven by you and sustained by you. Then the results will come. इसीलिए लोग बोलते हैं consistency in the process of learning is important. Consistency is source of sustaining. ये नहीं कि 4 दिन पढ़े उसके बाद 3 दिन सो रहे. You need to maintain a kind of curriculum according to your strength, capacity and the object under study या section under study. कुछ चीजें of course are going to be tough for you. They are not going to be easy for you. Okay? तो सस्टेन करना बहुत जरूरी होता है. यहाँ पे सस्टेन लिखना जरूरी है. एंड थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, डू यू थिंक दिस डेफिनेशन इज कंप्लीट? क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ट हाइड्रोजन वेपन्स आर आल्सो देयर. दे कुड बी कॉल्ड आर्टिफिशियल सन. ये जो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन इज कंट्रोल्ड एंड confined. Controlled and confined. That is why the production of energy and light is sustained. Uncontrolled नहीं है. If the hydrogen weapon that is also based on nuclear fusion is detonated, that is uncontrolled fusion. तो चीज को control and confine करोगे तब वो sustain होगा. Now question arise where this is controlled and confined. That is in the core of the sun. The control and confined nuclear fusion is in the core of the sun. With extremely high temperature and pressure. Nuclear fusion does not occur at low temperature and low pressure. It requires extremely high temperature and pressure. That is a precondition. Nuclear fusion does not occur at room temperature. This is the problem in nuclear fusion because it occurs at extremely high temperature and pressure, and we have to control and confine it to produce sustained energy. Got it? The question arises, which force is controlling and confining? That is gravity of the sun. Gravity of sun, gravity always works towards center or outside? Sun, center. So that is controlling and confining nuclear fusion. And where? Inside core of the sun. Remember that core of the sun is not source of the light, direct light, okay na? That is source of energy. Light comes from something else, outer part of the sun. अभी आ रहा हूँ. जिस पे पूछा था पिछले साल क्वेश्चन था फोटोस्फीयर पे.
अभी आ रहा हूँ, रुक जाओ, इसी को पहले खत्म करता हूँ. लेट मी डिमोलिश इट फर्स्ट. डिमोलिशन ऑफ नॉलेज. तुमको मेरी पढ़ाई में बहुत मजा आ रहा है नहीं? तुम पढ़ कम रही हो, मजा ज्यादा ले रही हो. Fusion of lighter nuclei to produce heavier nuclei. Fusion is a process of combination. और ना होगा तो 2 ड्रॉप लेना, उसको फ्यूज करना घर पे जाके. Take a leaf, put 2 water drops and leave this, and they will fuse together. अब ये तो फ्यूजन तो करा नहीं सकते. आगे चलें. The gravity is, question arise from where such a huge gravity comes. Remember that 99.8% of mass of solar system is confined within sun. लिख लो, 99.8% mass of solar system is confined within sun. Within solar system. Within sun. 99.8% mass of solar system is within sun. Rest of the bodies which you have written just 0.2. Inequality itself is in solar system. So inequality is produced by nature itself. With the nurturing, anthropogenic efforts, interventions या interferences, either we are increasing the inequality या reducing the. Reducing inequality stands for social justice. Nature itself is unequal. Kind to few and unkind to many. Through nurturing, we are increasing, nurturing is like a kind of intervention. वो तो positive term है. We reduce it. By nature, some people are stronger, some people are more enterprising, and some people are weak and lavish. But that is racial superiority theory. ऐसे मत बोलो. Now that is discarded. With the nurturing, we can improve. ऐसे मत करो, हिस्ट्री में फेल कर देगा. बोलेगा you are racist. You are racist? No. No, do not believe in racial superiority of the British and the Germans. You believe in the equality of the human races. बोलो yes sir. हंस क्यों रही हो? बोलो. ये हटा दें इसे. Remember that. So this is core of sun. Above core of sun we have convective zone. Convective zone. आ गया भाई, आदित्य अभी आ गया. Which part of the sun we have launched to discover and study. अब ऐसे ही आते जाएगा. अगर थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा ना तो नहीं समझ में आएगा, तुमको रटना पड़ जाएगा. तो तुमको लर्न करना है या रटना है? तुम किस पे ज्यादा जोर देती हो, समझने पे या रटने पे? हाँ तो समझ. अब इसी से तुम्हारा वो हो जाएगा कि भाई इंडिया हैज लॉन्च्ड आदित्य, विच पार्ट टू स्टडी ऑफ द सन. अब इसी से तुम्हारा समझ में आ जाएगा. उसके बाद तुम्हारा होता है फोटोस्फेयर, एंड देन क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना. अभी गलती कर रही थी. कोरोना इज आउटर मोस्ट. कोरोना इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन. सीक्वेंसिंग ही पूछा हुआ है.
यही होता है ना, लोग बेसिक्स नहीं करते हैं, लोग टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, दे वांट टू टॉप। हम लोगों की तरफ ईस्टर्न यूपी, दिस इज हाउ दे स्पीक इंग्लिश, टॉप, बस स्टॉप, कॉपी। हाउ यू स्पीक कॉपी, यू से बस स्टॉप, हम लोग बस स्टॉप। कॉपी खरीदने जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं। बिहारीज डू नॉट वोट, दे वोट। Maybe you are the elite Bihari. There are two kinds of Biharis. One, the elite. They studying in the boarding schools since very beginning. Another kind are the poor. Chromosphere. Chroma means something which is colored. Photosphere. So remember that process of nuclear fusion, which is controlled and confined, is limited to core of the sun. Limited to core of the sun. Not in, it does not occur in the rest of the layers above the core of the sun. Process of nuclear fusion is limited to core of the sun with extremely high temperature and pressure. It does not occur in layers above core of the sun, whatever the layers you have written, convective zone and all that. Questions हैं इससे, massive number of questions are there. Photosphere तो last year था, solar flares and impact, तीनों चारों पांचों। तो पहले तो पता यही होना चाहिए ना कि सोलर फ्लेयर होता कहाँ है। Which become darker, which part of the sun become cyclically darker and the brighter. आगे चलें, convective zone. You know that convection is a process of transportation of heat in fluids. Convection is a process of transportation of heat in fluids. Fluids means liquid and gaseous. How do you differentiate between solids and fluids? Define. Someone has studied science. बाबू उतना ज्यादा सिविल सर्विसेज में सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। सिंपल डेफिनेशन, सॉलिड इज रिजिड, डज नॉट टेक द शेप ऑफ द पॉट। फ्लूइड्स टेक द शेप ऑफ द पॉट। बस इतना ही कहने की जरूरत होती है सिविल सर्विस में, उससे ज्यादा वो डेफिनेशन सुनने के लिए तैयार नहीं होता। कॉमन सेंस पूछता है वो आपसे, वो नहीं सोच रहा कि आप बीएससी हैं और एमएससी हैं फिजिक्स ऑनर्स में। सॉलिड्स आर रिजिड, they do not take the shape of the pot they put into, but the fluids have ability to take the shape of the pot. So convection occurs in the fluids, and convection is a system of transportation of heat. Okay na? So this is how convection is indicated. Sorry. It is going downward. Okay na? Hot and lighter fluid rises, flow outward, get colder and sinks back. This is the process of convection. और climatology में आएगा process of convection. अब if I heat this glass over here, so hot and lighter water will rise, outflow on the either side, sinks. चाय बनाया है ना, that is through the process of convection. भात बनाया है, that is through the process of. And microwave radiation. और तावा पे रोटी, that is conduction. Okay ना, that is conduction. याद रखो, ठीक है ना, ऐसे ही पूछेगा. Intermolecular transfer of heat is called conduction. Conduction occurs in solids. Solids are rigid. ठीक है ना, लिखवा दे तीनों क्या, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट.
मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट। ऐसा करो तुम लोग, यू पीपल ब्रिंग वन डायरी, दीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद ज्योग्राफी, इनडायरेक्ट है, सपोर्ट है, उसको कहीं और लिख लिया करो। जैसे वॉट एवर द इंस्ट्रक्शंस आई गिव, you write somewhere else, not in your main note, and don't use this pen pages and all that. Shall I stop? इस तरह से लिखोगे तो मेरे ऊपर क्या इंप्रेशन बनेगा, मतलब दिस काइंड ऑफ पेजेस एंड ऑल दैट, स्पेंडिंग सो मच टाइम, सो मच मनी एंड राइटिंग ऑन द दिस प्लेस। ये तो मैं 6 में लेके जाता था, 6 स्टैंडर्ड में, पेज दो दो लेके लिख रहे हो, कॉपी में लिखो। क्या लिखे हो? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट या फ्लो ऑफ हीट। पहला कंडक्शन, intermolecular transfer of heat in solids. Transfer of heat in solids. And which is the best conductor? Silver. Silver is the best conductor. पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। कंप्यूटर्स में मोस्टली यूज सेमी कंडक्टर्स विद द डोपिंग। कंडक्टर का मतलब विच इज कंडक्टिंग हीट थ्रू द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। आई एम आस्किंग मेटल्स, नॉट ग्रेफाइट इज नॉट ए मेटल, it is coal. Second, convection, transportation of heat in fluids by rise and outflow of hotter and lighter fluid. By rise and outflow of hotter and lighter fluid, उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। राइज एंड आउटफ्लो, यहां पे आउटफ्लो हो रहा है ना, दैट इज हॉट एंड लाइटर, राइज करेगा, आउटफ्लो करेगा। एंड रेडिएशन इन वेव फॉर्म, फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव इज कॉल्ड रेडिएशन। In wave form, in the form of wave, ripples, उसको radiation बोलते हैं। So remember that for conduction and convection we require medium, but energy can travel in form of radiation without presence of a medium too. लिख लीजिए, इतना ही छोटा छोटा पूछता है बाबू, तुमको थोड़े भाई कि बीएससी की फिजिक्स की ऑप्टिक्स की किताब पढ़नी है। So medium is required for conduction and convection. Radiation can travel even into the vacuum. Vacuum without medium, even in the vacuum. So how the energy will travel from sun to earth? Radiation. Energy received by earth from sun is not in form of conduction and convection. It is in form of radiation. क्योंकि रेडिएशन नहीं रहता तो हमें एनर्जी नहीं मिलती, बिकॉज देयर इज एब्सेंस ऑफ मीडियम बिटवीन अर्थ एंड सन। दिस इज हाउ अर्थ विल रिसीव एनर्जी फ्रॉम सन।
आगे चलें। तो कन्वेक्टिव जोन का मतलब होगा द पार्ट ऑफ सन या लेयर ऑफ द सन डोमिनेटेड बाय प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, दैट इज ट्रांसपोर्टिंग हीट थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन फ्रॉम द कोर टू द फोटोस्फीयर। प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन से तभी कन्वेक्टिव बोल रहा है। इससे भी आदमी को पढ़ना चाहिए कि नाम क्या है। कन्वेक्टिव जोन मीन्स द पार्ट विच इज डोमिनेटेड बाय प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। द पार्ट ऑफ द सन या लेयर ऑफ द सन डोमिनेटेड बाय प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन इज कॉल्ड कन्वेक्टिव जोन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट फ्रॉम सन टू कोर ऑफ द सन टू फोटोस्फीयर। लोअर पार्ट ऑफ द चाय की पत्ती एंड द वाटर एंड ऑल दैट टू द अपर पार्ट। भात बनाई हो ना, भात कन्वेक्शन से बनता है। चाय बनाई हो, चाय कन्वेक्शन से बनता है। नहीं होगा आज घर जाके बनाना। पुट इनटू अ बॉटल एंड ब्रिंग इट टुमारो, विल ड्रिंक टुगेदर, विल सेलिब्रेट द नॉलेज। दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट द नॉलेज। देखो, नॉलेज दो तरह का होता है। वन इज प्रोसीजरल नॉलेज, लाइक आई एम टीचिंग यू, एंड द सेकेंड इज टैसिट नॉलेज, समथिंग विच यू लर्न थ्रू प्रैक्टिस, गोइंग थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो चाय बनाओगी, भात बनाओगी, दैट चावल, then you will learn the process of convection. That is why I said that make tea, put into a kind of this thing, container, and bring it tomorrow. We'll drink together. We'll celebrate knowledge of convection, understanding convection. ऐसे थोड़े आएगा। पैसा खर्च करो, टाइम खर्च करो। टैसिट बोलते हैं, TACIT, टैसिट नॉलेज बोलते हैं। जैसे कि तुम कहते हो स्ट्रैटेजी एंड टैक्टिक्स। टैक्टिक्स इज लर्न्ड, दैट इज मॉक टेस्ट आदमी लेता है, दैट इज टू अंडरस्टैंड द टैसिट नॉलेज इटसेल्फ। दैट इज व्हाई people go directly to the people who have qualified civil services. They can transfer you procedural knowledge, but how the tacit knowledge which they have accumulated over the years, and you consider that 5 minutes of lecture, that will be defining the things and completing the things. First you have to cover the syllabus itself, cover the PYQ itself, because in 5 minutes no one can sum up their entire knowledge which they have gained through the process of learning. वो tacit knowledge होता है। अब तुम ही लोग इसमें बोलोगे कि सर मुझे ज्योग्राफी नहीं समझ में आता, उसका कोई मेरे पास आंसर नहीं है। ज्योग्राफी में सन नहीं समझ में आया, सोलर सिस्टम नहीं समझ में आया, फोटोस्फीयर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, देयर इज एन आंसर। ज्योग्राफी नहीं समझ में आया तो उसके लिए तो मैं कोई जादूगर तो नहीं हूं, आई एम नॉट ए मैजिशियन। वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये फॉल्स स्ट्रैटेजी होती है। लोगों को समझते हैं कि 5 मिनट हम बात कर लेंगे तो दे विल ट्रांसफर द नॉलेज। टैसिट नॉलेज इज नॉन ट्रांसफरेबल, दैट यू हैव टू लर्न। जैसे कि कन्वेक्शन को मैंने बता दिया प्रोसीजरल, टैसिट घर पे जाओ, चावल बनाओ, चाय बनाओ। देखना जहां पे ओवन होगा वहां पे ज्यादा तेजी से उठेगा, आउट स्प्रेड होगा, नीचे ऐसे आके ऐसे ऐसे करेगा। जितना ज्यादा ओवन उठाओगे बीच में उतना ही ऊपर जाएगा टू इट, बिकॉज इट विल बी हार्टर, लाइटर एंड more distance it will travel, more altitude it will travel. नहीं होगा तो ओवन को धीरे धीरे ऊपर नीचे करते। तो माइक्रोवेव ओवन में कैसे होता है? थ्रू द रेडिएशन। ओके ना? That is why there is uniform heating. In microwave oven there is uniform heating. और कन्वेक्शन में आउटसाइड इन, कंडक्शन में आउटसाइड इन। इसीलिए ना चपाती को ऐसे क्यों करते हो? कि ऑन द ईदर साइड्स दैट विल बी हीटेड, है ना? लिख लो भैया, ऐसे ही पूछता है। माइक्रोवेव ओवन पूछा हुआ है। माइक्रोवेव ओवन में कुकिंग इज विद द हेल्प ऑफ
microwave radiation. And that is why there is uniform cooking, uniform heating and cooking, but through the process of conduction and convection outside in. तभी तो लोग चावल को ऐसे देखते हैं ना बिहार में, ऐसे करके अंदर का गला है कि नहीं देखते हैं ना. इसका मतलब क्या? तो द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, कुकिंग ऑफ राइस इज आउटसाइड इन. मीट को ऐसे करके लोग देखते हैं कि अंदर वाला पका है कि नहीं. क्यों? देखे हो ना. इतना ही सिविल सर्विस में जरूरी होता है, इससे ज्यादा नहीं. नॉट मोर देन दिस. बेसिक्स पे ही वो तुमको फंसाता है. हाँ, इक्वली हीट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. क्यों? होता क्या है कि देयर आर वाटर मॉलिक्यूल्स इन समथिंग which have to be cooked, that is absorbing microwaves and that vibrate. That is the source of energy. That is why in microwave oven something which is not containing water molecules cannot be heated. ठीक है ना. पूछा हुआ है माइक्रोवेव ओवन मेंस में, साइंस एंड टेक में. Photosphere, the part of sun which is visible to us, and its temperature is 6000 degrees centigrade. degrees centigrade. And that is source of emission of light. That is source of emission of light. Part of that is spectrum which is visible to our eyes. Our eyes could sense to. 6000 degrees centigrade. And photosphere is the part of sun where we have solar spots and solar flares. सोलर फ्लेयर, इनके इंपैक्ट में जियोमैग्नेटिज्म के साथ पढ़ा दूं और ऑरा बोरियालिस के साथ. सोलर फ्लेयर, फ्लेयर FLARE, फ्लेयर इज ब्राइटर and this is darker. Impact of solar flare was there on telecommunication systems, on atmosphere of Earth, aurora borealis and australis and all that. वो geomagnetism में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना. Because alone it does not have any. When the darker is produced, when darkness is produced, with the rise in temperature या fall in temperature, fall in temperature of photosphere, solar spots are produced, and rise in temperature, so solar flares look brighter than average and solar spots looks darker than average. And remember that if their extreme condition of solar flares and solar spots occur, they could be also source of climate change on. But this climate change is anthropogenic, okay na? This climate change is anthropogenic. Okay na, लिख लो, these are potential source for climate change. Disturbance in solar flares in extreme conditions. If the magnitude and frequency is extreme, extraordinary, so they are the potential source of climate change. कौन सा? ये नहीं मैं बोला हूं. Current climate change is anthropogenic. That is what I said. That is emission of greenhouse gases.
and they are growing size and concentration in atmosphere. सही पढ़ा है ना? ज्ञान है मेरे पास, ज्ञान लग रहा है, ज्ञानी हूं कि अज्ञानी? जब बीच में ज्ञानी है, ठीक है। हाँ, मैंने बोला कि करंट क्लाइमेट चेंज as we are witnessing is anthropogenic. Anthropogenic means man-made. इसीलिए anthropology is the science of understanding of man, physical, cultural as well as social. This is जब होगा तो they are the potential source for climate change, but that is going to be the natural. ये man made है, हम man made crisis face कर रहे हैं। हमने बहुत ऐसा तबाही कर दिया, हमने ऐसा ज्यादा इंटरफेयर कर दिया है कि that is happening. But there could be naturally introduced all climate change too. है ना? There were naturally introduced climate change too, because in the past Earth had witnessed geological periods of glaciation, that is expansion of glaciers, thickening of glaciers, enlarging the size of glaciers, and interglaciation, warming in the past even. एनुअल एवरेज टेम्परेचर में लिख, उसी से तो हम देखेंगे ना, रिफरेंशियल है ना, एवरेज एनुअल टेम्परेचर मैंने लिखा हुआ है, और ऑन एक्स एक्सिस टाइम. तो देयर वेर फेजेज ऑफ वार्मिंग जहां पे टेम्परेचर इज राइजिंग अप, and there were phases of cooling where temperature is coming down. So this is interglaciation period, when glaciers melt, they become thinner, smaller, okay na? And when earth goes for cooling, that is called glaciation period. Glaciation का मतलब क्या? Enlargement of glaciers. एवरेज एनुअल टेम्परेचर इज द रेफरेंस, तो उसी से देखोगे ना कि कितना फ्लक्चुएट कर रहा है. तो जब ऊपर जाएगा तो उसको इंटरग्लेशिएशन कहते हैं. किसमें? इंटरग्लेशियस, होलोसिन पीरियड इज इंटरग्लेशियस, बट देयर वाज सडन एंड एब्रप्ट राइज इन पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पीरियड, उसको हम अभी ग्लोबल वार्मिंग बोल रहे हैं, एंड दैट इज एंथ्रोपोजेनिक. लेकिन देयर आर पीपल हु क्वेश्चन दिस आर्गुमेंट कि दैट इज नेचुरल, कुड बी, बट 95% ऑफ पीपल बिलीव दैट करंट सिनेरियो इज एंथ्रोपोजेनिक. But in the past, I am saying we had interglaciation and glaciation period. Okay ना? इस पे क्वेश्चन है. किसमें? ग्लेशिएशन का मतलब होता है ग्लेशियर का फॉर्मेशन. ग्लेशियर का फॉर्मेशन कब होगा? कूलिंग से होगा या हीटिंग से होगा? कूलिंग से होगा. So then the average temperature of Earth declines. So ices, glaciation is also called ices. You are right, ice. Or interglaciation period means between the ices. So in the past we had also glaciation and interglaciation. ओके ना? वार्मिंग को इंटरग्लेशिएशन बोल, कूलिंग को ग्लेशिएशन बोल. तो ऑल दीज पास्ट इवेंट्स वेर नेचुरली ओरिजिनेट. ओके ना? बट नाउ इट इज एंथ्रोपोजेनिक. ये डिफरेंस बताना जरूरी हो.
in the past we had naturally occurring periods of geological periods. You know that is called age of the rocks, earth and all that is called geological period. Naturally occurring glaciation and interglaciation. And both were threat to the biodiversity. दोनों threat, glaciation भी, interglaciation. एवरेज, ये ग्राफ तो तुमको इकोनॉमिक्स में भी लागू हो जाएगा. इकोनॉमिक बूम एंड इकोनॉमिक बस्ट, इकोनॉमिक एक्सपेंशन एंड इकोनॉमिक कंट्रैक्शन. Boom is also source of bust if it is too much speculative. 5 रुपए की एसेट है और 50 रुपए में तुम खरीदोगी, क्यों खरीदोगी? The assumption will be कि there will be another fool buying it for 100 rupees. Speculation always works on the assumption of greater fool theory. जैसे हम तुमको मूर्ख बना रहे हैं, तुमको यूपीएससी को मूर्ख बनाना है. If I am not able to make you fool, I will be the greatest fool. And if you are not able to make fool to UPSC, then you will be the greatest. You are buying my arguments on the assumption that UPSC will buy the arguments. है ना? You are buying my knowledge. Why you are buying my knowledge? UPSC will buy this knowledge itself. UPSC is there to buy the knowledge transferred by me to you. So you are in the class, na? अगर तुमको ये पता चले यूपीएससी को जरूरत ही नहीं है ये, तो तुम क्लास में होगे, तब क्या होगा? मैं और मेरी तन्हाई अक्सर बातें करते. तुम होते तो ये पढ़ाता, तुम होते तो फोटो स्फीयर पढ़ाता, है कि नहीं है? तो इकोनॉमिक बूम कब होता है? जब ग्रीड ज्यादा हो जाए. हाँ, ग्रीड से ही बूम होता है. 5 रुपए की चीज मैं 50 रुपए में तभी खरीदूंगा जब लगेगा कि मैं 100 रुपए इसको बेच के खरीदूंगा. एंड ग्रीड इज सोर्स ऑफ फियर. व्हेन द फियर वर्क्स, देन द बस्ट अकर्स. लिख लो, कहीं आ जाएगा. व्हेन द फियर अकर्स, देन द बस्ट अकर्स. इकोनॉमिक कंट्रैक्शन अकर्स. जो मिल रहा है उसी पे बेच के चलो. दैट इज कॉल्ड बियरिश फेज. फियर से बूम थोड़े होता है, ग्रीड से होता है, लालच से. PUST. कंट्रैक्शन लिख लो, इकोनॉमिक कंट्रैक्शन, रिसेशन, डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम रेट एंड ऑल दैट, जो भी हो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, है ना? तो फियर से होता है. फर्स्ट जो होता है वो फियर से होता है, और बूम जो होता है ग्रीड से. एंड बोथ आर पार्ट ऑफ द कैपिटलिज्म. बोथ आर पार्ट ऑफ कैपिटलिज्म. मैं बहक तो नहीं रहा हूं ना? Holocene period is an interglaciation itself, but the rate of rise is more. The rise is more, and that is more after industrial revolution. वहां से भी तो आप कर सकते हो ना डिसकंटिन्यूटी से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तक ऐसे था और उसके बाद ये ऐसे हो रहा है. इसका मतलब दिस इज गोइंग टू बी एंथ्रोपोजेनिक. मोर बाय एंथ्रोपोजेनिक, लेस बाय नेचर. का है नहीं होता है ना? अब तुम लोगों को बताऊं, दिस इज हाउ यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस. Last year to last year there was a question from this itself. V-shaped recovery of Indian economy after pandemic. ये जो तुम्हारा ये होता है, इकोनॉमिक्स ले लोगे तो ये जो होता है यहां से आने के बाद ये, दैट इज रिकवरी, इकोनॉमिक रिकवरी.
So, and economic recovery is based on relief provided by. तो यहां से पहले रिलीफ होता है, उसके बाद रिकवरी एंड देन रिफॉर्म. ओके ना, यही क्वेश्चन था. दोनों के डायग्राम में सम सिमिलैरिटी है, तो यू कैन इंटरकनेक्ट योर नॉलेज, ज्ञान की इंटरकनेक्शन. दैट इज व्हाई यस्टरडे आई एम्फसाइज ऑन इंटरकनेक्टिविटी. सेम डायग्राम है फॉर द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो एंड द इकोनॉमिक्स ऑल्सो. अरे जब बस्ट होगा तो रिलीफ प्रोवाइड होगा ना. Relief is source of recovery, upswing of the curve, and then the reform must be introduced so that later on we do not face again bust. लिख लो कहीं, कल से एक डायरी ले आना छोटा सा. ओके ना, पीछे. अरे वाह, स्मार्टेस्ट, यू आर द स्मार्टेस्ट वन. वहां पे ये सब चीज लिख लिया करना कि कैसे कैसे इंटरकनेक्टिविटी इज गेटिंग आस्क्ड. Now, chromosphere and the corona are the outer layers of sun. So, why Aditya was launched? To study these layers of the sun. These layers of the sun, outermost parts of the sun, corona of the sun, and happenings in the corona, chromosphere and the photosphere. फोटोस्फीयर पे स्पेशली इवेंट्स ऑफ सोलर स्पॉट्स एंड सोलर फ्लेयर्स. बस इतना ही तो है बाबू, इतना ही यूपीएससी पूछता है. कोरोना इज लेस डेंसर. जैसे जैसे इनसाइड यू विल कम, डेंसिटी विल इंक्रीज, प्रेशर विल इंक्रीज. एंड कोरोना gradually merge into the vacuum. Gradually merge into the vacuum. Corona and chromosphere are visible during solar eclipse. Formation of diamond ring. They are not naturally visible to us. फॉर्मेशन ऑफ डायमंड रिंग बोलते हैं. एन इवेंट ऑफ सोलर इक्लिप्स नोन एज डायमंड रिंग. वो मैं पढ़ा दूंगा तुमको. दैट इज लाइक डायमंड इटसेल्फ. धीरे धीरे वो ऊपर राइज करेगा ना विद द मूवमेंट. एवरीथिंग इज मूविंग ना. अर्थ इज मूविंग, मून इज मूविंग. ओके ना. तो व्हेन द सोलर इक्लिप्स इज फॉर्म, व्हेन द मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन. So diameter of moon will be covering the diameter of sun with the photosphere. ऊपर वाला दिखेगा. जब ये ब्लॉक हो जाएगा तभी तो ये वाला दिखेगा ना. इतने वाले को ब्लॉक करने के लिए मून की पोजीशन चाहिए बिटवीन द अर्थ एंड सन. और जब ये ब्लॉक हो जाता है तो ये दिखता है. एंड सिंस द मून इज मूविंग टू, अर्थ इज मूविंग टू, ग्रेजुअली द फोटोस्फीयर विल कम अप. तो लगता है कि रिंग हो गया. वो बीड्स की तरह दिखता है, ऊपर बीड्स की तरह दिखेगा. यस, यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डायमंड. डायमंड ऑल्सो हैज स्पेकुलेटिव वैल्यू. नहीं, ऐसा नहीं है कि सबको पसंद है. आई डोंट लाइक डायमंड. आई लाइक प्लैटिनम या गोल्ड. दे हैव द रियल वैल्यू. एनी टाइम यू कैन एक्सचेंज. Which is easily sellable in the market? Gold. Gold, no? I like gold and silver. हाँ? Diamond पे नहीं मिलता. Diamond also involves impurity, no? And diamond has moreover perceived value, greater perceived value. Otherwise ये तो कोयला ही है. Metamorphic form of coal. Diamond is mostly used during the engagements and the marriages. And the engagements and marriages of the people of the not diamonds.
द वैल्यू हैज बीन क्रिएटेड फॉर द डायमंड. लाइक किसी का बर्थडे हो, तुम लोगों को लगता है आरसीजी कार्ड ही जरूरी है, चॉकलेट ही जरूरी है, केक ही जरूरी है. दैट हैज बीन वैल्यू क्रिएटेड, and the value creation is behind the demand, and controlling the supply, they control the prices of the diamond. This is how they create the demand. An engagement, a marriage without diamond is unacceptable. Girl ज़्यादा demand करती हैं boys when the marriages occur, engagements of the diamond ring. Which side demand comes? हंस क्यों रहे हैं? सोशल इश्यूज का पार्ट है. और बहुत सारे जगह पे डायमंड माइनिंग के लिए फाइनेंसेस होते हैं टू कंट्रोल द डायमंड माइंस इन द अफ्रीका. And controlling the supply, they control the value is created behind the diamond, that is necessary behind the marriage and engagement. वो demand create करता है. Are controlling the supply, they control the price. नहीं है तो एक there is a movie Blood Diamond, you people watch it. Very good movie, Blood Diamond. How diamond these selling companies are engaged in the civil war, financing the civil war in the Africa, and the cost behind it. That scam was exposed. They were financing civil wars also. They were the child soldiers also, and they are still there. In India में भी बहुत सारी चीजें mines are under control of the mafias, and you must have heard of the Reddy brothers of the south. So if this is the situation in India, you think of the situation in the Africa, a dark continent. आगे चलें. And someone is writing the name De Beers. See, he must be knowing the name of the company too. See the value. He must not be knowing the chromosphere and the photosphere. He is knowing De Beers. Who is there? Shobha Amin. More precious a thing, more deeper it is. Less concentration is. So that is always a kind of chance value. Like rare earth minerals. You dig here, you can find the rare earth, but the kind of the size and density is not going to be commercially viable. अगर तुम यहाँ पे भी कुआं खोदोगे थोड़ा बहुत नेचुरल गैस मिल जाएगा, but the size is not economically viable. Economic, this is economic. See, this is size. Okay, na? Turnover of a given economic activity must be above the cost involved. Then it becomes profitable. This side. From here to here, the size of cost is more than the turnover. Okay, turnover is not able to meet the cost. Economic activity cannot be sustained, and if it is sustained with the help of government, support of government. ओके ना, इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं या ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं. तो किसी भी चीज का टर्नओवर मस्ट बी
able to meet the cost. Like many people in our district and all that, they go and open Pizza Hut and 6 months it is closed. Do you think that the people are Baliyan that will buy 500 rupees pizza? And how many people will buy? वो बाटी चोखा खा के मस्त रहेगा ना, सतुआ के वो वाला खा के मस्त रहेगा, वो 500 रुपये का पिज्जा खाएगा, वो लिट्टी चोखा खा के मस्त रहेगा. So that is there. Now planets. अरे 4 बज गए क्या? तो बोलना चाहिए ना, मैं पढ़ाते वक्त देखता नहीं हूँ. Planets, tomorrow we will go on the planet. असल में उसमें के लिए ना तीनों का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, इसीलिए मैं इक्लिप्स नहीं पढ़ा रहा हूँ. ओशियनोग्राफी व्हेन आई विल टीच यू टाइड्स, तो टाइड्स के साथ ही कंबाइन कर दूंगा, क्योंकि टाइड्स में भी तीनों कंबाइन होता है, सन अर्थ एंड मार्स, सन अर्थ एंड मून, और इसमें भी दोनों को कंबाइन करके पढ़ा दूंगा, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी. किसको इक्विलिब्रियम कहते हैं या ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं या ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं? डिमांड सप्लाई का ऐसे होता है बाबू. ये है क्वांटिटी प्राइस. डिमांड एंड दिस इज ये अलग दिखा रहा है ना, साइज दिखा रहा है, साइज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, साइज ऑफ, एंड इट इज रिलेटेड विद द साइज ऑफ, दिस इज रिलेटेड विद द डिमांड एंड सप्लाई. This is called demand supply equilibrium. This kind of situation, demand more than the supply, that is the inflation. Supply exceeding demand, that is called deflation. ये कौन सा इसमें? ये दोनों यहीं से राइज करेगा ना. हाँ राइज, हाँ वैसे ही राइज करता. ये 2 डायमेंशनल मैप है ना, दिस इज द 2 डायमेंशनल रियलिटी, मीन्स दिस इज 2 डायमेंशनल प्रोजेक्शन ऑफ रियलिटी. नहीं होगा तो मैंने बोला है कि भात बनाना घर पे या चाय बनाना, उसको कल लेके आना, पी, और ध्यान से देखना जहां से उठ रहा है कि नहीं.